So I'm sure you must be also concerned about the fact that US markets, American market जो है उनको काफी एक बड़ा धक्का लगा बुधवार को. A very hotter than expected CPI numbers has caused great amount of havoc. ठीक है, तो बहुत सारा CPI नंबर जो है वो बहुत ही तेज निकला. A hotter than expected consumer price index has rattled the markets, but the markets are buzzing about an even more specific prices gauge contained within the data, which is the so-called supercore inflation reading. Now, along with the overall inflation measure, economists also look at the core CPI, which excludes the volatile food and energy prices to find the true trend. The supercore gauge, which also excludes shelter and rent costs from its services reading, takes it even a step further. Fed officials say that it is useful in the current scenario as they see elevated housing inflation as a temporary problem and not as good a gauge of the underlying pressures. The supercore inflation, this is the reason why these markets have fallen, accelerated to a 4.8% pace year over year in March, the highest in 11 months. Now, if you take the readings of the last 3 months and annualize them, you will look at a supercore inflation of more than 8%, which is far from the Federal Reserve's 2% goal. आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व जो है वो ब्याज दर घटाएगी. ये घटने के बजाय तो इन्फ्लेशन जो सुपर कोर है, जो मेन इन्फ्लेशन है, तत्व का है जो इन्फ्लेशन, वो बढ़ते जा रहा है. कैसे ब्याज दर घटोगे? फर्स्ट पीपल आर थिंकिंग 6 rate cuts, then 3, and all this had led to gold rising like crazy. CPI increased 3.5% year over year last month, above the Dow Jones estimate that called for the 3.4%. This data pressured the equities and sent treasury yields through the roof on Wednesday and pushed the futures markets to extend out expectations for the central bank's first rate cut to September from June, according to the CME Group's FedWatch tool. At the end of the day, they really don't care as they get to 2%, but the reality is you are not going to get to a sustained 2% if you don't see a key cooling in services prices. And at this point, we are not seeing it because you're seeing even the jobs data being rather hot. So Friday, we saw hot jobs data. On Wednesday, we saw very hot consumer price index data. Okay. So Wall Street has been aware of the trend coming from supercore inflation from the beginning of the year. A move higher in the metric from January's CPI print was enough to hinder the market's perception that the US Federal Reserve was winning the battle with inflation, and this will remain an open question for months to come. And the problem for the Fed lies in the differing macroeconomic backdrop of the demand-driven inflation and robust stimulus payments that equipped consumers to beef up the discretionary spending in 2021 and 22, while also stoking record inflation levels. Today, the picture is much more complicated because some of the most stubborn components of service inflation are household necessities like car and housing insurance, as well as property taxes. ये तो घटने का नाम ही नहीं ले रहे, तो इन्फ्लेशन का एक सर्विसेज का इन्फ्लेशन भी नहीं गिर रहा है, और वो प्राइसेस जो है गुड्स के वो भी नहीं गिर रहे. ठीक है, तो इन दिस बैकड्रॉप वी आर एंटरिंग इनटू द मार्केट्स in the second half, nearing the second half of April 2024, जहां तक एक्सपेक्टेशंस थे कि गिरते जाएगा ब्याज दर, तब मार्केट बढ़ते जा रहे थे. गोल्ड, सोना, चांदी सब बढ़ रहा था क्योंकि उसका कैरिंग कॉस्ट भी कम होते जा रहा था.
अगर ये घटे नहीं और दिक्कत बढ़ती गई तो जो लोगों को लगते थे जो भी शेयर है बढ़ते जाएंगे, सब बढ़ते जाएंगे, वो दिक्कत में आ जाएगी. So please be careful in the markets. There is another piece of important data that is going to come out of the United States tonight. And further complicating the backdrop is a dwindling consumer savings rate and higher borrowing costs, which make the central bank move likely to keep monetary policy restrictive until something really breaks. So get to know more. Please do join our Gudi Padwa Cheti Chand special, and you can WhatsApp us on 9820861044 and be a beneficiary of our daily predictions and very good stock recommendations. तो भाई और बहनों, जरूर हमारा गुड़ी पड़वा उगाड़ी चेटी चंद स्पेशल ज्वाइन करें. डेली मार्केट के बारे में आपको अच्छे टाइमिंग्स मिलते हैं. कल भी बताया था कि दिन अच्छा रहेगा, छोटे मोटे फॉल्स बीच में वही हुआ, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं. और दूसरा आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रीमियम वैल्यू, जो पूरा हफ्ते भर का आपको प्रेडिक्शंस एडवांस में देता है. ठीक है, तो ये सिचुएशन से हम एंटर कर रहे हैं. आगे के 20 दिन अप्रैल के जो रह गए हैं, क्रूशल पीरियड आ रहा है. अब तो पुश होते जा रहा है, इंटरेस्ट रेट कट जो है पुश होते जा रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि एवरीथिंग इज ओवर and done and dusted, but there is increasing possibility of great nervousness in the market. And if the treasury yields remain so high, interest rate yields remain so high, then there is a possibility that some of the regional banks can get into trouble, because with such high yields, then the bond prices will be marked down, mark to market. That can add pressure on these banks, the regional banks, and throw the US markets, the American markets into a tailspin, and that can also impact the world financial markets. कि संभाल के रहिएगा. बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर ऐसे ही एलिवेटेड रहे ट्रेजरी यील्ड तो कोई रीजनल बैंक्स को फिर से दिक्कत आने की संभावना. तो ये सब जो है जाने के लिए आगे कहाँ मार्केट जा रहा है. ओवर ट्रेडिंग नहीं करिए, एक तो मैं ये कहता हूँ, और दूसरी बात, एक बहुत संभाल के आप लोगों को रहना होगा. हमने पूरा एनालिसिस करके रखा है, लेकिन ये बैकड्रॉप जो है वो कठिन है. एक तरफ से प्रोडक्टिविटी गेन्स बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एट द सेम टाइम यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ वेरी स्टबर्न इन्फ्लेशन एंड वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स. तो ये बैलेंस करके कहाँ पे टर्न होगा मार्केट, तो ज़रूर हमारा बहुत ही मॉडरेटली प्राइस्ड है गुड़ी पड़वा उगाड़ी स्पेशल पैकेज ज्वाइन करें, या तो फिर बहुत ही खूबसूरत आपको 1 वीक का प्रेडिक्शंस एडवांस के लिए प्रीमियम वैल्यू ज्वाइन करें. प्रीमियम प्लस आपको 2 हफ्ते एडवांस में देता है. ठीक है, सभी करने संपर्क करने का सेम नंबर इज देयर 9820861044. एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग. लॉट ऑफ पीपल have been writing to me about my dark glasses yesterday and nothing has happened. It was very hot and I wanted to record an urgent video, so I felt that it was to cool the eyes down, wore some nice dark glasses. And whenever the heat is there, I like to wear it. Okay friends, thank you so much and have a great investing day ahead. Investing week ahead. Next week will be very, very crucial. Tomorrow will also be very interesting because the Indian markets will absorb the CPI, PPI both at the same time. Chali, happy investing. God bless you all and take care. Bye-bye.